because today is 3rd of June. I'm born on 30th of September, but nowadays I celebrate my birthday on 3rd of June because it was 3rd of June 1999, where when I went in for surgery, there wasn't much hope of me being alive due to the repetitive tumor surgeries. And even if I had stayed alive, I would have been chest below paralyzed because my spinal cord would have got damaged. 3rd of June was a day of decision, a day of choice. And that day I made a choice of life. I prayed to Almighty that give me life, let me live. I have to bring up 2 young daughters. I will do my best to accept in whatever body you keep me in. Well, 3rd of June did give me that gift of life. Today is 3rd of June, and every 3rd of June we do a puja at home, followed by a party at home. My children call it a Phoenix birthday. And when I got a call from Guru Prasad sir, and he said, "How about coming to go?" And I said, "Sir, it's like a day, and आज अगर हम सनातन धर्म को देखें तो बुढ़वा मंगलवार है, one of the most auspicious days in my religion, a day of gratitude, manifestation, prayers. They say the alignment of planets is in the most auspicious position." And then I looked into myself and I said, what better way to celebrate such an important day? जिसमें इतनी आस्था से अगर मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहती हूँ, तो क्यों ना आस्था में आकर मैं वो धन्यवाद दूँ। मेरे लिए ये धन्यवाद और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब मेरी बिटिया 14 महीने की थी, नया नया चलना शुरू किया था। मेरा बचपन अस्पताल में गुजरा है। 5 से 9 वर्ष की आयु मेरी लकवाग्रस्त रही, क्योंकि मेरा बचपन का ट्यूमर आया, मेरी सर्जरी हुई, रिहैबिलिटेशन हुआ, चलना सीखा, और 30 साल की उम्र में 99 में मुझे दोबारा ट्यूमर्स आए, और उसके बाद से मैं आज 26 साल हो गए मैं व्हील चेयर पे हूँ। लेकिन अपने बचपन को मैं भुलाकर अपनी बेटी के बचपन में देखना चाह रही थी कि जब वो चलेगी, वो खेलेगी, वो कूदेगी, तो मैं शायद अपने बचपन की तकलीफ या वो अपंगता को भूल जाऊंगी। लेकिन 14 महीने की देविका का एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुई, लेफ्ट साइड पैरालाइज हुआ, और वो भी लकवाग्रस्त हो गई। लोगों ने कहा कि बचपन की बीमारी इसकी बेटी को लग गई। बहुत बुरा लगा कि 20 साल गुजर गए थे मेरी बचपन की बीमारी में और मेरी बेटी की नई बीमारी में। मानसिकता नहीं बदली थी, बिल्कुल नहीं बदली थी। वही ताने, वही लड़की है, कैसे जिएगी, यही शब्द सुनने को मिलते थे। और एक माँ होकर समझ आया कि मेरे माँ बाप, खासकर मेरी माँ, किन शब्दों को सुनकर गुजरी होगी। लेकिन शुक्रगुजार हूँ अपने उन सब रिहैबिलिटेशन ट्रेनर्स का, उन सब हाइड्रोथेरेपिस्ट का, उन डॉक्टर्स का, और सर्वप्रथम उन माँ बाप का, उन अभिभावकों का जिन्होंने मुझ पर कभी हार नहीं मानी और सही रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस के थ्रू मुझे बचपन में भी चलाया, और फिर मैंने अपनी बेटी को भी चलाया। आयज जे कितें आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट केले, या पर्पल फेस्टान भितर आमी फक्त तो इव्हेंट न्हय, इट वॉज अ रिव्होल्यूशन, इट वॉज अ मूवमेंट. That revolution brought a change. What was happening in early days, what we had seen in our families, in our relatives, that if a child born in our house, then we used to hide them in a dark room so that society does not come to know. The mentality गेल्ली आसा, we have changed the perception. Purple Festaचो हो फायदो आसा. नवे जेन्ना to overcome the disabilities of 21 disabilities, each one of them will find a solution in Purple Fest, because there are 200 stalls installed which will present all those technologies all across the country, not only country, all across the world. They come and they exhibit, and you come to know that what is available for me to overcome my disability. So because of that, therefore, we have a community more than 6 to 7% in the society, but we are not able to reach out to them because they don't come forward. Now we have decided to do an extensive survey of all the disabled
are expecting any aid, appliances, devices or not, you are well off. Even then you register it. We want to create a database so that we reach out to all of them. So this is the initiative that government of Goa under the leadership of Dr. Pramod Sawant we have taken up. And I promise you, we are trying our best. We may be आता खूप वर्षांनी हे सुरू झालेले असा म्हणटकच आमकां टाइम लागतलो. Overnight we cannot change anything. But संस्थाs like Aastha and the कार्यकर्ता workers, आमचे जे कमिटेड लोक हांगा आयिल्ले आसात तांच्या सारकी साथ आमकां मेळ्ळे जर जायत, आमचे चेतना स्कूल म्हणून कुडचड्यार आसा ह्याच पद्धतीचे असे कार्यकर्ते जर मेळ्ळे जर जायत, इट इज इजी. My late father was very instrumental with Aastha's Anand Niketan. Right from the beginning, he was a patron of this institute. And many of you may not know why. The reason is that I have a cousin sister who is specially gifted that used to live with us. Now she lives in a house just behind my house. And that is the reason we understood, we grew up in an atmosphere that required us to be patient, understanding and loving towards this special child. And through that, it made us open our eyes towards society, towards people that had the same challenge, people that had the same difficulty, people that could not understand what having a special child was like growing up. So as much as my family has had a hard time understanding, I can truly say that we are blessed by God to have this person amongst us, to have the opportunity to watch this person grow. Of course, she's still there. We very much love her a lot, and she has grown up to be a very strong and independent young girl. So it is through that my late father got very emotionally involved with Anand Niketan, and he would always go out of his way to make sure that he was there for them. Similarly, I have not missed a single function, I think, of Anand Niketan ever since I have been elected as the MLA of Mapusa. It is very easy to say that you stand with them, but it is the challenge comes when you have to understand, I think, how the entire operations work, how to manage with the teaching staff, the non-teaching staff, because you require people to be patient, you require people to understand the challenges involved. And I think having a facility like this helps the teaching, the non-teaching staff, and everybody that is involved to give a better facility to our young special children. It not only aids them, but it helps the parents be more comfortable. Ultimately, every parent wants what is comfortable for their child, to be in an environment that supports and nurtures them. And they have managed with such a small space for all these years. And when I walked into this institute, every time I would pass on the street, I would say that I would look at the progress of the building and say how quickly it is coming up. And I was just telling Guru Baba, coming up here, when the final coat of paint was applied, I was like, the day is coming close when we will all get to see this entire project in its full force. Of course, we saw it as on paper, but to be able to be standing here gives me a sense of pride that in my constituency, we have such a facility for the specially abled children. जब मैं फाउंडेशन स्टोन के लिए आया था तब से गुरु ने मुझे आज का कार्यक्रम में एक्चुअली मैंने गुरु को बुलाया था, आप करके ले लो ना, मुझे ही क्यों बुला रहे हो आप बार बार, रियली इस वर्ड में बोला था गुरु बोला नहीं आपको पता नहीं, इसलिए समझो मैं आऊंगा क्या नहीं आऊंगा, इसलिए खास करके उसने सिद्धेश और डॉक्टर चंद्रशेखर को मेरे घर पे भेज दिया कि उसको डाउट था शायद मैं नहीं आऊंगा, और अनिल सामंत सर तीनों मेरे घर पे आए और बोले मुझे कम से कम 2 घंटा तो आपने इस कार्यक्रम में देना ही चाहिए। एक्चुअली मैं इतना टाइम तो बिल्कुल ही नहीं देता था, लेकिन मैं सही में मुझे लगा मैंने इस संस्था के लिए कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ बोल रहे हैं। दैट इज माय पोस्ट
which had given the sanction for this संस्था. मैंने खुद नहीं किया, मैं बोलता हूँ मैं जिस पोस्ट पे हूँ और जिस पोस्ट पे मेरे सिग्नेचर से हो सका वही मैंने किया है और कुछ नहीं किया है बस. और लेकिन जिन जिन लोगों ने इस संस्था को इंडिविजुअली हेल्प किया, इंडिविजुअली मदद किया, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ सही में इसके लिए, क्योंकि इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द 15 crores विच पहली बार जैसे एमपी ने कहा कि प्रोजेक्ट इज 12 crores पे कंप्लीट होगा. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि जो खुद का घर भी कोई करने जाए तो इतने कम रेट में कहीं नहीं हो सकता. लेकिन उनको सबको लगा कि ये हमारा घर है, हमने करना चाहिए, इसीलिए ये कंप्लीट हो सका. म्हाका दिसता आम्ही पळयता की सातत्यान म्हणजे म्हापशेकारांची आस्था आता गोंयकारांची आस्था जाल्ली आसा. सेंटर ऑफ एक्सलन्स अशा पद्दतीचे हांगा जाले की अजूनय बी गोंयांत अशें हांव पळयता की मुद्दामून म्हणजे हांव एक 8-10 दिसा पयलीं हांव रिवायज करतालो द बेस्ट प्रॅक्टिसीस इन द कंट्री, त्यो खंयच्या खंयच्या स्टेटीच्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस कितें आसा. आमच्या स्टेटीत जे आम्ही पर्सन विथ डिसेबिलिटी खातीर काम करता तिके खंयच्या स्टेटीत करिना हे प्राऊडली हांव सांगूंक शकता. आनी क्रेडिट गोज टू मिस्टर सुभाष फळदेसाई, गुरू पावसकर एंड एंटायर टीम फॉर द न्यू डिपार्टमेंट डायरेक्टर हांगासर बसल्या आनी ताच्या पुराय टिमीक हांव म्हाका म्हणचो ना, कित्याक इट इज देअर विजन. म्हणजे तांच्यांनी म्हाका फक्त प्रेजेंट केलें आमी कितें करपाक जाय, कशें करपाक जाय. हांवें तांकां वांगडाच सांगलें एका उतरान हय आमकां करपाक जाय. बट इट इज नॉट ओनली विथ द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. हांव पळयता की आमी 3 डिपार्टमेंटांतल्यान काम करता. एक इज एड्युकेशन डिपार्टमेंट, दुसरें इज द हेल्थ डिपार्टमेंट आनी तिसरें सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. बट तशें पळोवंक वचत जाल्यार ह्या 3 डिपार्टमेंटाचें काम फुडें धुकलपा खातीर गुरू सातत्यान कितें ना कितें करून म्हाजे कडेन येत आसता. हेल्थातलें इंटरव्हेन्शन सेंटर सुरू करपा खातीर ऑलमोस्ट नॉर्थ आनी साऊथ तोच म्हाज्या फाटल्यान लागलो. म्हणून आउट ऑफ द वे वचून सगळी मदत करून आमी दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी म्हणजे अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर सुरू करपाक शकले. सो दॅट डायग्नोसीस बेगीन जावपाक जाय, ट्रिटमेंट बेगीन जावपाक जाय, भुरग्यांची रिकवरी त्या निमित्तान बेगीन जावपाक जाय. एड्युकेशनात तर आमी वन ऑफ द बेस्ट काम पुराय स्टेटीत करता म्हणपाक काय हरकत ना. स्पेशल स्कूल आसतली किंवा आमी रिसोर्स रूम आसतलो तो स्पेशल स्कुलांत तर वेगवेगळ्या नॉर्मल स्कुलांनी आमी ऑलरेडी सुरवात केला. इन्क्लुझिविटी खातीर आमी ताका टिचर्स दिवप किंवा इवन तो आमी बीएड कोर्सचो सुरवात केलो. आमी बीएड कोर्स इतक्याच खातीर सुरवात केलो आमकां स्पेशल टिचर्स हे हातूंतले गरज आशिल्ले. आमी बीएड कोर्स सुरवात केलो आनी तातूंतल्यान जो इवन आमी सायन लँग्वेज इंटरप्रिटेशन कोर्स सुरवात केलो. तरी आमचं इंटेन्शन आशिल्लें की स्पीच थेरपी सुरू करपाक जाय आमकां. ह्यो बाकीच्यो थेरपी सुद्दां हांचे जे सुरू करपाचें आमचें इंटेन्शन आसा तेंच सगळें हांगा सुरू करचें. आनी निदान म्हणजे सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी हांगासर प्रायवेटली काय आसना बट सुरू करपाक शकले.